Hi, welcome back. You are once again with Mudassir. English with Mudassir. I hope you will be fine and enjoying your life. In today's video, I'll be talking about what is subjective and objective pronoun. आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि subjective और objective pronoun में फर्क क्या है. Let's begin. As you know that pronoun, it is a word which is used in place of noun. For example, he, she, it, us, her, him, etc. So what is subjective pronoun? So subjective pronoun, those pronouns which are used before main words to function as the subject of the sentence. हमारे साथ वो प्रोनाउन जो मेन वर्ब के पहले इस्तेमाल होते हैं और एज अ सब्जेक्ट एक सेंटेंस में काम करते हैं, उसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, आई राइट लेटर. वी हैव थ्री थिंग्स इन सेंटेंस. Subject, verb, object. I told you which is used before the main verb and used as a subject. That is called subjective pronoun. For example, she, he, they, I. This should be capital because it comes in the start of the sentence. Got it? Now coming toward objective pronoun. What is objective pronoun? Those pronouns which are used after main verbs to function as the object of the sentence. ये हमारे साथ मेन वर्ब के बाद आते हैं और एज ए ऑब्जेक्ट काम करते हैं. इसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, आई टोल्ड यू. इट कम्स इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. सो दिस इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. हर इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ शी. हिम इज द ऑब्जेक्ट ही हिम इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ ही. देम इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ दे. Me is the objective case of I. So these nouns, ये pronoun हमारे साथ sentence के last में आते हैं. इसको हम objective pronoun कहते हैं. ये pronoun हमारे साथ sentence के start में आते हैं and working as a subject. इसको हम subjective noun कहते हैं. As a whole, subjective and objective pronoun known as personal pronoun. और हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को एज अ होल पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, you can ask in comment section. Like my video, share with friends, and don't forget to subscribe my channel. See you in next video.